हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिवोशन ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का एक हार्ड प्रॉब्लम है, वर्ड ब्रेक। अब ये उनको हार्ड लग सकता है जिनको थोड़ा बहुत रिकर्जन नहीं आता है, थोड़ा बहुत बैक ट्रैकिंग नहीं आता है। इफ यू आर अवेयर अबाउट सम बेसिक टू मॉडरेट लेवल ऑफ रिकर्जन as well as backtracking, then yeah, this problem is will be easier to you. So let us directly switch towards the writing pad. So yes, leet code problem named word break 2. Now many of you might be saying as this is a 2, then there might be word break 1 as well. Yes, but if you are able to understand 2, then you will be able to solve this one. So at the end of the video, we'll also discuss how to solve this one, but we won't be writing the complete code because code is almost similar as this, even though this one is relatively easier. So yeah, we won't be writing a separate code for word break 1. We'll be understanding each and everything for word break 2. So let us understand the question first. So you are given a string cats and dog. Cats and dog. This is the string given to us, and this is a word dictionary which is given, and it contains separate word cat, cats, and sand and dog. So we have to partition this string in such a way that after partitioning, all the words that we are getting should be of from word dictionary only. For example, here you can do cats and dog. So as you can see, all these three words, cats and dog, they are from cats and dog. Yes. Another you can do is cat, sand, dog. So these are also from word dictionary only. Cat, sand, and dog. So we have to return this to final vector of string. Okay. Let me take another example as well. This is another example. String given to us is pine, apple, pen, apple. Pine, apple, pen, apple. And accordingly, this is the word dictionary given to us. So we can divide this into many ways. For example, first one, if we are willing to break or partition, first one will be pine here. Then you can also take apple, pine, apple, then pen over here and another partition over here. So apple. This is the one way. Second way is just a second. Yeah. Second way is if you want to write pine first partition here, then apple pen is also there as you can see. So another partition we will be making here. So pine, apple pen, and the last partition over here. So apple. So this is the another string, and we can also create the third one. So in which way we can create? Yeah, for first will be over here only pine. Oh, sorry, pine apple is also there, complete word. So we can make first partition over here. So pine apple, then pen and apple, pen and apple. So 1, 2, and 3. These three things we have to return, as you can see over here. So this is the main problem, and we have to solve this. So what can be the approach? How we can tackle the problem? Let's understand. To understand the approach, first let us see what we are doing here. For example, this is a string given to us: pine, apple, pen, apple. So as you can see, there are many ways. One partition I can make here. So we get pine here. Then if we are moving forward from here, then one partition we can make over here. Then we have answer accordingly. Then
another partition here, then another partition directly over here. So pine, apple, pen, and then apple. So this is a respective answer. Another way is make first partition over here. Take complete pineapple, then pen, then apple. So if you are aware, we have to check all the possibilities whether we can make partition or not. We have to check all the possibilities. Okay, but how to explore all the possibilities? Whenever all the possibilities are supposed to be explored, only one word should come into the mind, and that is recursion. Yes, recursion is the only concept, मतलब ये एक ही ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे हम सारी possibilities को explore कर सकते हैं. So obviously we have to use recursion over here, but how? Let us take the example: pine, apple, pen, apple. Okay, yes. So this is the string given to us. Now we are starting from this point, right? So first we can take only P, then only PI, PIN, PINE, and there is a word dictionary which has pine, apple, pen, and pineapple. This is the word dictionary given to us. Okay, yes. So we can also take just P, PI, PIN, PINE. So wherever we are taking so many words, when one can make partition? That's the question. When I can make the partition? For example, if I'm starting from P, PI, PIN, PINE, we can make partition over here only when the string which we are chasing should be present in the word dictionary over here. Let me again repeat. If we are starting from here, then we will be coming here, here, here. So string till this part is fine. It is present in word dictionary. And then only we can make partition over here. Okay, we are making partition over here. We are adding fine into our answer, fine and space. Okay, no worries. Then the next string is apple. Again means again we will be adding A, P, P, L, E. Now as soon as we reach over here, apple, we check, yes, apple is present in the dictionary. So we will add apple, make partition over here. Then we will again start with P as the first character. Okay, then P, E, N, we will see, yes, pen is present over here. We will add space and pen, and yes, again we'll start from this pointer A, P, P, L, E. Yes, we can see apple is present. We will add apple, and at finally we will reach after the index out of bound. Okay, okay, this is the base case. But how? Let me tell you afterwards. So this is the case when we made partition over here, 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 and here. Okay. Yes. Okay. So if we are reaching the base case, okay, let me tell you. Base case means whenever you are reaching this index, it will be only when you have made partition on the last index over here. So whenever we are reaching idx greater than equal to s dot size, this is the base case. Means we have got the valid string over here. If this was not valid, for example, yes, let us understand another case. For example, there is instead of this apple, there is I. So A, P, P, L, I. So here we are at the last index and we are checking apple. Instead of apple, apply is not in the word dictionary anywhere. So this is not valid. So we won't be considering the string that we have got because we are not reaching at the end. So apply is not present in the word dictionary. So we will be again going back, means backtracking. So reaching over the last index is the base case. Just a second, yes. So this was done. Then after reaching here, we will add this as an answer. Then we will go back. We have to backtrack. So what are the strings that we have added over here?
For example, apple. We will remove this from the answer. We will backtrack. So we will just remove this much part. Again, pen. This was the last. So now we will go for PEN. We tried for this one and we got pen. Now we will again explore further. We will check for PENA, PENAP and the whole part. And then we will get pen apple at last, which is not present in the word dictionary. So we will again backtrack. So this was the all things for this index is completed. So now we will remove pen as well from the part. Now मीन्स सी जिसको रिकर्जन पता है वही पता चल रहा होगा कि अभी मैं क्या लिख रहा हूँ. अगर आपको रिकर्जन नहीं पता है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज leave the video from here because this is something not easy to understand if you are not aware about recursion. So yes. So अभी हम यहाँ पे खड़े थे, एप्पल वाला था. अभी एप्पल तो आ गया. अभी आगे जाएंगे हम लोग. एप्पल, अभी इसको एप्पल भी निकाल देना पड़ेगा. एप्पल PEN. अभी क्या आएगा? एप्पल पेन आ गया. अभी एप्पल पेन भी नहीं है तो नहीं चलेगा. ये भी तो ये भी निकल जाएगा हमारा. अभी सिर्फ पाइन बचा है. अभी पाइन के साथ हम एप्पल पूरा ले सकते हैं. पाइन एप्पल. अभी हम देखेंगे पाइन एप्पल है. हाँ जी है. यहाँ पे एक पार्टीशन लगा दिया हियर. देन वी विल चेक अगेन फॉर PEN. हाँ जी पेन है. स्पेस डाल दिया, पेन डाल दिया. यहाँ पे पार्टीशन डाल दिया, नया डाल स्टार्ट किया APPLE. हाँ जी एप्पल है. ये आ गया हमारा नया स्ट्रिंग. सो इसी तरह पे हम तभी पार्टीशन करेंगे जब भी हमारा पहले कोई स्ट्रिंग आ चुका है. स्ट्रिंग एनकाउंटर्ड बिफोर इज पार्ट ऑफ वर्ड डिक्शनरी. अभी देखो इसमें थोड़ा मतलब एक चीज आपको बोलता हूँ. ये हमें वर्ड डिक्शनरी दिया है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दिया है. ठीक है. सो every time you won't be checking. For example, these are the strings given to us. So after taking some part in the string, you won't be checking for this and this. It will take off and time complexity. इसको कुछ अलग तरीके से हम reduce कर सकते हैं. हाँ जी, हम off login में ला सकते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल ये सारे जो है उसको हम इधर सेट और मैप जैसे डेटा स्ट्रक्चर में डाल दें. By the way, those who are not aware about set and map data structure, they can explore our C++ STL playlist in which we have covered each and every detail. Okay, ये थोड़ा हो गया थोड़ा मार्केटिंग. अभी चलते हैं वीडियो में. तो हम सेट और मैप का यूज कर सकते हैं. तो ये जो सारी स्ट्रिंग्स है उसमें फॉर एग्जांपल मैं उसको सेट में डाल देता हूँ. अनऑर्डर्ड सेट बोलते हैं. अनऑर्डर्ड सेट में डाल दिया मैंने. तो आई कैन सर्च फॉर एवरी स्ट्रिंग इन log and time complexity. So yeah, ये नहीं होगा. अगर O of n होगा तो भाई आराम से टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा. ओके. So this was the main concept. We will start from the main index and we will keep adding unless and until we find that particular string over here. If we found, we will make a partition over here and we will move further accordingly. Time complexity लास्ट में देखते हैं कोड लिखने के बाद. ठीक है. So let us head directly towards writing the code. And yes, where is our LeetCode? Recording is still going on. Yes, here is the LeetCode. Let me zoom a bit. As I told you, we have to include some vector. Oh, sorry, set or map. So for example, let us take unordered set of string st for auto it. I don't like this complete word dict. So let me change the name. We will pass this by reference so that it don't waste any time making a copy. st dot insert it. Okay. Now everything is done. So now we will directly call the recursive function. Okay, vector of string we have to return. Vector of string ans, and we will call the function in which we are passing the initial string as st ans and the temporary string that we are creating. So initially it will be empty, and here we are writing void because we are not returning anything. Void
string parameter. First is string s, unordered set of string vector of string ns and string str. अभी बेस केस क्या था? बेस केस तो तभी होगा जब हम आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाएंगे। इसका मतलब मैंने पिछले इंडेक्स पे पार्टीशन लगाया होगा, तभी हम पहुंचेंगे। तो बेस केस इफ idx ग्रेटर देन इक्वल टू s डॉट साइज हो रहा है, तो हम जो टेम्पररी स्ट्रिंग जो हम बना रहे हैं वो हम इस स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ans डॉट पुश बैक str, ठीक है, एंड रिटर्न सिंपली। अभी चलेगा, अभी क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे खड़े हैं इनिशियली, तो हमें ये p इंसर्ट करना पड़ेगा। तो 4 int I इक्वल टू idx, ओके idx देना भूल गए हम, I लेस देन s डॉट साइज i प्लस प्लस दे देते हैं 0, क्योंकि पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे हम, int idx, ओके str प्लस इक्वल टू s ऑफ idx, ठीक है। अगर हमें मिल जाता है इफ st डॉट फाइंड क्या str नॉट इक्वल टू st डॉट end, मतलब वो लाइक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल पाइन तक पहुंचे हैं, अगर पाइन इसमें एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर स्ट्रिंग था उसमें पाइन के साथ एक स्पेस ऐड कर रहे थे, हम एक नया स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू str, टेम्प में हम एक स्पेस भी डाल देते हैं, और हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके इसमें एक नया स्ट्रिंग लेना पड़ेगा पूरा, स्ट्रिंग टेम्प ओके चलो इसके बाद एक नया ले लेते हैं, स्ट्रिंग ओके टेम्प, इसके बाद ले लेते हैं स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अभी अगर मुझे मिल गया, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प पहले मुझे ऐड क्या करना है, ठीक है, str प्लस इक्वल टू तो रिकर्जन में ये होता है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी। यार तो इसको नहीं करते, हम फाइनल स्ट्रिंग में कब ऐड करेंगे, जब हमारा कुछ वैलिड आया है, तो अभी हम करेंगे s ऑफ idx, ओके सही है सही है। अभी अगर हमारा टेम्प हमें मिलता है, तो सपोज हमारा यहाँ अगर मुझे पाइन मिला लिस्ट में, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग एक नया जो ऐड करना है वो बनाते हैं, स्ट्रिंग ऐड इक्वल टू टेम्प, टेम्प ऐड प्लस इक्वल टू, यहाँ पे एक ये डाल दिया स्पेस, और हम क्या करेंगे, str जो था हमारा ऐड इसमें डाल दिया, और हम फंक्शन कॉल कर देंगे आगे का, मतलब हमने यहाँ पे पार्टीशन लगाया, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में idx प्लस 1 डाल देंगे, idx प्लस 1 s st ns str, ठीक है। अभी ये पार्टीशन हो गया, अभी ये जो हमारा str जो हमने उसमें अभी है पाइन है, अभी अभी ये बाकी का रिकर्जन आएगा तो वो कॉल होगा। अभी जो रिकर्जन आ रहा है आगे जाके, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एप्पल एप्पल डाला था, अभी ये जो फिर से रिकर्जन कॉल के बाद आएगा तो पाइन स्पेस एप्पल होगा मेरा, अभी तो मुझे स्पेस और एप्पल निकालना पड़ेगा, जो कि था यहाँ पे मेरा ऐड था। तो मैं क्या करूंगा, आफ्टर रिकर्जन फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन ऐड डॉट साइज j प्लस प्लस, क्या करेंगे इसमें से
str था, ओके str में निकालना पड़ेगा, str डॉट पॉप बैक, ठीक है। ये हम निकाल देंगे कि ये बेसिकली ये स्टेप क्या है, ये है बैक ट्रैक का स्टेप है। ये रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना भाई, लेट मी मेक श्योर। थोड़ा कट हो रहा है, ओके ये है बैक ट्रैक का स्टेप है, यस। स्क्रीन अभी नहीं कट रही है एंड ये सब हो जाएगा। बाद में आंसर में हमारे सारे स्टोर हो जाएंगे रिटर्न एनएस। एक बार रन करके देख लेते हैं कहीं कोई एरर है कि नहीं। आउटपुट क्यों ऐसे आ रहा है भाई? आईडीएक्स नहीं भाई, आई okay guys, so there was a minute error. Here we were writing idx plus 1, but here it should be I plus 1 because partition should be is always made on ith index. So I plus 1, and one mistake was that whenever we are popping back here, so it contains space at last index. For example, at here I am making, so it contains apple and space, so it contains one space extra, so we have to pop that one letter and we have to insert. So as we are submitting or running the code, it is working. So let us finally submit, and yes, it is accepted 100%, 75%, okay, decent, बढ़िया है। अभी वर्ड ब्रेक जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। ये लीट कोड है, तो ये लीट और कोड ये दो वर्ड्स में ब्रेक हो सकता है, तभी हमें इसमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो अभी ये डीपी का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये डीपी मैंने रिमूव कर दिया, सबमिशंस, यस। सो बेसिकली इट इज अ डीपी प्रॉब्लम, एडिटर डीपी रिकर्सिव डीपी आई हैव यूज्ड हियर। पर ये डीपी का प्रॉब्लम इसलिए है, वर्ड ब्रेक टू डीपी का नहीं है, क्योंकि हमें उसमें हर एक यूनिक कॉम्बिनेशन एंड में रिटर्न करना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे दिया होता, लीट कोड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे दिया है LEET कोड और लीट, ये इतने सारे यहाँ पे दिए हैं। तो पहला पार्टीशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे और कोड, फिर दूसरा पार्टीशन हम यहाँ पे कर सकते हैं और कोड। तो आप देख सकते फॉर एग्जांपल लीट कोड, मैं आपको रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करके बताता हूँ। एक केस ये है लीट और यहाँ पे पार्टीशन किया कोड, दूसरा है LE पार्टीशन ET और कोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिकर्सिव कॉल फॉर कोड इज ट्वाइस ओवर हियर। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स में मैंने पार्टीशन किया है, तो इसके बाद क्या मुझे मिल रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स को हम मेमोइज कर देंगे इक्वल टू बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स जो भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं ले सकते रिस्क, मतलब टीएल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम मेमोइजिंग द इंडेक्स। सो या दिस इज द कोड, सिमिलर कोड है, अगर बेस केस भी सेम है, अगर पहुंच गए लास्ट में तो ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हम इस इंडेक्स का पार्टीशन वैलिड है, अगर नहीं है तो इस इंडेक्स का पार्टीशन मतलब नहीं है पॉसिबल। सो या now let us understand the time complexity of the word break too that I told you we will do at the last. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सभी में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसका ओ ऑफ एन लग जाएगा, सॉरी ओ ऑफ नहीं है, माय बैड। अगर मैं आपको स्ट्रिंग दे रहा हूँ यहाँ पे लीट कोड, और डिक्शनरी में है LEETCODE, मतलब हर एक एलिमेंट इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। तो हर एक के लिए मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा और यहाँ पे आएगा फिर आगे जाएगा, इसका रिकर्सिव कॉल लगा फिर आगे जाएगा। तो हर एक एलिमेंट पे
दो चीजें हो रही है, एक तो उसका रिकर्सिव कॉल लग रहा है और वो आगे जा रहा है, तो बेसिकली ये 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यस और नो? यस। और लास्ट में हम पूरा जो हमारा स्ट्रिंग मिला है str उसको हम पुश बैक कर रहे हैं ans में, तो ये स्ट्रिंग की कॉपी बन रही होगी। तो n क्रॉस 2n is the time complexity of, yes. And yeah, I think this is it for the video. Please give this problem a try. This is a very nice problem. And we'll meet in the next video very soon. Till then, keep learning, keep hard working. Thank you very much.